Now next type is vegetative propagation. Vegetative propagation is a type of reproduction in which a new individual is formed from a vegetative part of the plant. Now this vegetative part may be stem, it may be root, or it may be leaves. So these are some examples in which the reproduction takes place by stems. You can see by aerial stems. By aerial stems, new individual can be formed. So you have to learn examples in each of these cases. By subaerial stems also, like in strawberry and jasmine, and by underground stems also. These underground stems are called rhizomes, corms, or bulbs. You have to learn example of rhizome, corm, and bulb. Rhizome example is ginger and turmeric. Corm example, इसमें example is saffron, and bulbs example is onion. Tuber का example है potato. So you have to learn these examples. Now artificial vegetative propagation. This type of vegetative propagation was natural vegetative propagation. Now it can be done artificially also. So in artificial vegetative propagation there are some methods, like first is cutting. Cutting is a very simple method. In cutting method, we cut the stem from one part and we sow that stem in the soil, and from that stem a new individual is formed. So many plants can be grown by this method, like money plant, rose, China rose, they can be grown by this method. Second is called grafting. Grafting is a method in which the stem of one plant is grafted over the other stem of other plant. कैसे ग्राफ्ट करना है, इसमें दो वर्ड्स हैं यहाँ पर आएंगे. वन इज कॉल्ड स्टॉक एंड वन इज कॉल्ड साइमन. स्टॉक इज अ प्लांट दैट इज ऑलरेडी इंसर्टेड इन द सोइल. जो लगा हुआ प्लांट है दैट इज कॉल्ड स्टॉक. आपने दूसरे प्लांट का ब्रांच लिया है, उस ब्रांच को हम बोलेंगे सायोन. दिस सायोन इज फिक्स्ड हियर इन द स्टॉक, और इसको अच्छे से हम बांध देंगे, ठीक है. And then from here a new plant will form. So this is a method of grafting. Then comes the method of layering. In layering method what we do, we take from one branch that is near to the ground, we bend that branch and insert it in the soil. यहाँ पर अंदर soil में इसको दबा देंगे. This portion will develop adventitious roots and give rise to a new individual from here. So इस मेथड से हम फेंसिंग तैयार करते हैं. जो फेंस बनता है वो फेंस इसी मेथड से बनता है. इट इज सीन इन मिंट एंड रोज ऑल्सो इट कैन बी डन. देन कम्स द नेक्स्ट मेथड दैट इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर मेथड. In tissue culture method, a new individual is formed from the tissues of already existing individual. अब इसमें क्या करते हैं, we used to take some tissues from one plant and we put that tissues in artificial medium where they grows and develop a mass of cell. This mass of cell is called callus. Callus को फिर निकाल के हम दूसरे मीडियम में रख देते हैं. That medium is having hormones in it. In this medium the differentiation and formation of plantlets takes place. छोटा plant बन जाएगा. That plantlets are grown in the soil then and a new individual is formed. तो ये जो आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मेथड है, इसके क्या फ़ायदे हैं. फर्स्ट इज़ दैट इट इज़ अ फास्ट मेथड. बहुत जल्दी इंडिविजुअल बनता है इससे, और जो ऑफस्प्रिंग बनेगा इट विल एग्जैक्टली सिमिलर टू द पेरेंट, कोई डिफरेंसेस नहीं होंगे. दूसरा कि इस मेथड से जब प्लांट प्रोड्यूस करेगा देन इट विल बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन द न्यू प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय सीड्स. एंड दोज प्लांट्स विच आर सीडलेस प्लांट्स, उसके लिए ये अच्छा है ग्रो करने के लिए, क्योंकि सीडलेस प्लांट्स में सीड्स तो है नहीं, तो दे कैन बी ग्रोन बाय दिस मेथड, जैसे ग्रेप्स और बनानास हैं. देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो. डिसएडवांटेजेस क्या है, आई टोल्ड यू दैट द ऑफस्प्रिंग्स आर एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट. तो अगर पेरेंट में कोई बीमारी है तो दैट विल बी ट्रांसफर टू द ऑफस्प्रिंग ऑल्सो. सो दिस इज द प्रॉब्लम. And it can result in destruction of entire crop as there is no
डिस्पर्जल ऑफ प्लांट्स, देयर आर चांसेस ऑफ ओवर क्राउडिंग, यहाँ ओवर क्राउडिंग के चांसेस होते हैं, तो इसलिए जो इंटायर आपका क्रॉप है वो भी यहाँ पर खराब हो सकता है।